Hi, my dear friends. I'm Dr. Ratika, your Sarkari dermatologist, and I'm back after a long time. So, as we discussed last time, now I want to create a series where we do 100 days of skincare together. And as promised before that, I want to tell you how to use every skincare product. So, this video is going to be about that only. I'm just going to tell you how different skincare products are to be used. I'm sure you have seen a lot of videos about them, uh, but I want to tell you, whatever small my audience is, I want to tell them how I expect my patients, my community, to use skincare products. So let's just start. uh, so in skincare, when you are using 2 to 3 products at one time, the बेसिक रूल इज़ दैट यू गो फ्रॉम थिनर टू थिकर. जो आपका सबसे पतला वाला सोल्यूशन है, लोशन है या सीरम है, वो आप सबसे पहले लगाएंगे, और उससे थिक उसके बाद में, और जो सबसे थिक है वो लास्ट में लगाएंगे. जब हमने एक लेयर स्किन केयर का यूज़ किया है, उसके बाद में नेक्स्ट लेयर हम तभी ऐड करेंगे जब हमें फर्स्ट लेयर में ये फील हो रहा है कि हाँ, इट हैज़ बीन एब्जॉर्ब्ड ऑन द स्किन. वो 5-10 सेकेंड्स के अंदर ही ठीक लगने लगता है, एंड देन यू कैन प्रोसीड ऑन टू द नेक्स्ट लेयर. और इन केस यू आर गेटिंग रेडी इन बिटवीन, यू कैन डू सम अदर थिंग एंड सो दैट इट गेट सेटल्ड, एंड देन पुट ऑन द नेक्स्ट लेयर. So the common things that we use, I am going to show you. So these days everybody is very fond of using serums, right? So I have seen a lot of advertisements, a lot of influencers using their serums like this. This is absolutely wrong. You should not do it like this. You can't control the amount of serum that you're using like this, and in case the dropper of your serum touches your skin, it gets contaminated and you're putting it back into the bottle. No, it's not an ideal thing. Ideal thing is that your serums should come in pumpable solutions, ताकि वो ऑक्सीडाइज नहीं हो हर बार जब बाहर निकले. तो ideally you should have a bottle with a pumping mechanism. Even if not, if you have a similar dropper like situation like I do, so how I use it is, I take half a dropper, okay, half a dropper of the serum, and I drop it onto the tip of my fingers. I just spread it on the tip of my fingers and I just apply it on my face. Never ever forget your neck, okay? So you apply the same thing in the under eye area also, unless and until there is a reason for you not to apply it in the under eye area or any particular area on your face. By the way, I just washed my face. So whenever you're doing your skincare, you must wash your face first of all. Wash your face, pat dry with a clean towel, and the first step you should do is apply a serum in case you're using one. If you're not using a serum, absolutely fine. You can straight away proceed with your moisturizer. So I just applied the serum, whatever is left to the back of my hands, as I've told you earlier, okay? And now I feel that my serum has already been absorbed onto my skin, and the next step is to seal it with a moisturizer so that your serum is more effective and also your skin remains hydrated. So now is the time to use a moisturizer. So moisturizer is something you can use generously. You can apply more amount, will not matter much, okay? Moisturizer लगाते हुए कंजूसी नहीं करनी है. Okay, so I, in a similar manner, I took some moisturizer. I made a pea-sized amount here and I just gently spread it over to my fingertips, and again I am going to apply my moisturizer. Okay, since I've restarted using my retinol, I get a little dryness in this area, so I'm specifically tapping it onto this area. Otherwise, you just like any other normal cream that you apply. I like to apply my moisturizer on the top of my lids also. Okay, so I've applied my moisturizer all over,
and whatever is left goes on to my hands, so that you always have beautiful hands. And then my very important step, I take a little bit of my petroleum jelly and I dab it onto my lips. Yes. So now my skin is actually ready to receive any active ingredients. Okay. Whenever, like, when we give medicated products to patients, so this is how we want their skin to be before they use those products. Okay. So when I say that you have to apply this cream or this gel on your face, it is always after washing your face and prepping your skin. So wash your face and apply a moisturizer, and now your skin is ready to receive any active ingredient if you have been advised for it. Okay. अगर आपको कोई स्किन प्रॉब्लम नहीं है, आपकी स्किन नॉर्मल है, देन एंड इट इज़ मॉर्निंग टाइम, नाउ इज़ द स्टेज फॉर सनस्क्रीन. फिर आप डायरेक्टली सनस्क्रीन लगाइए इसके बाद में, एंड यू आर डन. अगर आप मेकअप करना चाहते हैं, आप सनस्क्रीन के ऊपर से मेकअप कर सकते हैं. दिस कैन बी योर नॉर्मल मॉर्निंग रूटीन. अगर आप अपना नाइट केयर रूटीन कर रहे हैं, तो ये सेम चीज़ कि आपने फेस वॉश कर लिया, उसके बाद आपने अच्छे से हाइड्रेट कर लिया फेस को मॉइस्चराइज़र से, सीरम से, है ना, पहले सीरम फिर मॉइस्चराइज़र. तो either you can just leave it like this if you do not have any skin concerns. if your skin is normal, आप सिर्फ ऐसे ही सोने के लिए जा सकते हैं. अगर आपको कोई स्किन इश्यूज हैं, आपका कोई ट्रीटमेंट चल रहा है, या आप जस्ट ऐसे ही एंटी एजिंग के लिए रेटिनॉल यूज़ कर रहे हैं, नाउ योर स्किन इज़ एक्चुअली प्रेप्ड इनफ टू अप्लाई रेटिनॉल ऑल्सो. सो अभी रेटिनॉल है या अजेलिक एसिड है या कोई भी मेडिकेटेड क्रीम है, ठीक है, वो इस स्टेज पर लगाई जा सकती है. मेडिकेटेड क्रीम कैसे यूज़ करना है, ठीक है, अगर आपको डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है, समटाइम्स योर डॉक्टर्स आर बिजी इन दी ओपीडी, वो इतना नहीं आपको टाइम दे पा रहे हैं कि कैसे मेडिसिन लगाना है, तो आई एम हेयर फॉर दैट. सो यू स्क्वीज आउट अ पीस साइज अमाउंट ऑफ द मेडिसिन. ओके, coming, it's coming. Okay, so this, as you can see, is the pea-sized amount. Let me take it on the other finger. This is pea-sized amount of medicine. Okay, I'm just using moisturizer again because now is not the time for me to do, you know, night or daycare routine. So I'm just giving you an example. For me, this is again the moisturizer. So this is a pea-sized amount of medicated creams that you take if you've been advised. आपको एक्ने के लिए अगर आप बेंजोइल पेरोक्साइड लगा रहे हैं, या क्लिंडामाइसिन लगा रहे हैं, एजेलिक एसिड लगा रहे हैं, कोई भी मेडिकेटेड क्रीम जो आपके डॉक्टर ने दी है फेस पे लगाने के लिए, इतना, एंड यू मेक स्मॉल डॉट्स with this all over your face. You spread it gradually. Okay, don't massage a lot, just spread gradually and leave. Okay, so this is how you use a medicated cream. You do not massage a lot. Okay, you take the prescribed quantity, क्योंकि वो दवाई है, उसका भी डोजेज है. सिर्फ क्रीम में है तो ये नहीं कि जितना मर्जी लगा लेंगे या ज़्यादा लगाएंगे तो ज़्यादा ठीक हो जाएंगे. नहीं, ज़्यादा लगाएंगे तो साइड इफेक्ट आ जाएगा. ठीक है, आपको उसका इरिटेशन होने लग जाएगा. तो इसलिए जितना क्वांटिटी बताया गया है उतना ही लगाइए. जनरली फेस के लिए पी साइज क्वांटिटी इनफ होती है मेडिकेटेड क्रीम के लिए. अगर आप मेडिकेटेड क्रीम बॉडी में किसी और पार्ट पे यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो हम उसके लिए यूज़ करते हैं फिंगर टिप यूनिट. यानी कि आप वो क्रीम लेते हैं और एक फिंगर टिप उसकी लाइन बनाते हैं. ठीक है, जो क्रीम्स होती हैं मेडिकेटेड क्रीम्स, उनका जनरली सबका नोज़ल जो होता है, जो होल है क्रीम के ऊपर जिससे वो बाहर आती हैं, वो 5 मिलीमीटर्स होता है इन जनरल. तो वो 5 मिलीमीटर्स का हम एक लाइन बनाएंगे, ये वाली जो फिंगर का क्रीज है इससे लेके और फिंगर के टिप तक. ठीक है, ये इतना जो मेडिसिन है, कोई भी क्रीम जो मेडिकेटेड क्रीम आप यूज़ कर रहे हैं, इतना मेडिसिन इतने सरफेस एरिया के लिए काफ़ी होता है. तो अगर कोई ऐसी क्रीम है, मान लीजिए किसी को सोरियासिस है ना, या एक्जिमा है, कोई और प्रॉब्लम है, उसके लिए आप कोई भी क्रीम, मेडिकेटेड क्रीम
दवाई आप यूज़ कर रहे हैं तो उसकी क्वांटिफिकेशन इस तरीके से की जा सकती है। ठीक है, अभी हमने फेस वॉश कर लिया, हमने अपना सीरम लगा लिया जो कि एक प्लस माइनस स्टेप है, उसके बाद हमने मॉइस्चराइज़र लगा लिया। ठीक है, और उसके बाद हमने अपने लिप्स को अलग से हाइड्रेट कर लिया। आप नॉर्मल मॉइस्चराइज़र भी लिप्स के ऊपर लगा सकते हैं, पर मुझे उसके ऊपर वैसलीन लगाना ज़्यादा पसंद है, उससे मुझे लगता है ज़्यादा अच्छे से हाइड्रेट होते हैं हमारे लिप्स। मैंने सेम ही सीरम, सेम ही मॉइस्चराइज़र अपने अंडर आई एरिया में भी लगाया है, कुछ स्पेशल नहीं लगाया है। अगर आप बहुत ज़्यादा इंथुजियास्ट हैं इस चीज़ के लिए और आप अलग से आई क्रीम यूज़ करना चाहते हैं, जिसका कुछ खास फ़ायदा होता नहीं है, बट अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, अंडर आई एरिया में ज़्यादा डार्क सर्कल्स हैं या आपको प्रिस्क्राइब किया गया है किसी रीज़न से मेडिकेशन, तो आप अपने मॉइस्चराइज़र के बाद अपना आई क्रीम भी लगा सकते हैं उस टाइम पे। ठीक है, सो नाउ योर स्किन इज़ कम्प्लीटली प्रेप्ड एंड आपने मेडिकेटेड जो क्रीम था वो भी मैंने बताया कैसे लगाना है फेस पे या बाकी बॉडी पार्ट पे। एंड नाउ कम्स द टाइम फॉर सनस्क्रीन, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। मोस्ट नहीं, सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, फर्स्ट तो मॉइस्चराइज़र ही रहेगा। ठीक है, सेकंड इज़ दिस स्किन केयर विद सनस्क्रीन। ओके, सनस्क्रीन बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब इंडिया में बहुत लोग सनस्क्रीन लगाना शुरू कर चुके हैं एंड आई होप दिस ट्रेंड गोज़ ऑन इंक्रीजिंग। ज़्यादा लोग सनस्क्रीन लगाएं, सही तरीके से लगाएं। ठीक है, तो अभी मैं आपको सनस्क्रीन यूज़ करके बताती हूँ। तो जो सनस्क्रीन है, बाकी जनरली क्रीम्स का जो नोज़ल है वो 5 mm का होता है, बट सनस्क्रीन का नोज़ल थोड़ा पतला होता है, 3 mm का होता है। तो उससे हम 2 फिंगर लेंस ड्रॉ करते हैं। आई विल जस्ट शो यू हाउ। दिस ओके, वो बीच में थोड़ा सा ब्रेक हो गया था, सो आई कंटिन्यूड इट अपवर्ड्स। सो दीज आर 2 फिंगर लेंथ सनस्क्रीन, है ना, ये 2 फिंगर लेंथ। नाउ आई डोंट वांट इट टू फॉल अपार्ट, आई वांट ऑल ऑफ इट इन माय हैंड। So this is a gel based sunscreen that I am using. You can use a combination of sunscreen and moisturizer. You can use a sunscreen lotion, whatever way you like it, but this much sunscreen is required for your face alone. Okay, now I'm going to apply it and you can see that it will settle down on my face. So I start applying this. I don't want to leave any area of my face which is not covered by sunscreen. Okay, initially yes, you will see a little bit of white cast. Most creams show that, but you give it 2-3 minutes and it settles down. So I have applied it, the same sunscreen, to my under eye area, to my nose, to my upper lip area. I'm going to all the areas of my face. Ideally you can apply sunscreen here also, but if I apply sunscreen in this area and I sweat, it goes into my eyes and causes irritation, so I don't apply my sunscreen in this area. अगर आपको सूट करता है आप अप्लाई कर सकते हैं, then you can continue. Now an equal amount of sunscreen is actually required for your neck also. So taking an equal amount of sunscreen and putting it onto my neck, because I don't want my neck and upper chest to give away the age. Although age just shows that you're getting wiser, but still feel like it, maybe behave like it, but why look like it? Okay, so whatever was left I applied it onto my hands. In case you're going out and your UV index is very high, you can apply sunscreen onto this area also. That will be a lot of sunscreen to apply. The easier way out is to wear full sleeved clothes, or you can wear gloves that are available for the arms. These are very commonly available nowadays and useful things if made of good material. Okay, so you can use that. If not, you can definitely apply sunscreen. Now I have made detailed videos of how to apply sunscreen and I have just shown you a demo. So this was the entire skincare that you need. Okay,
There is no end to these things. There are Korean skincare routines of 16 steps, 22 steps, what and what not. I don't think that much is required. I don't think that is practical for a everyday approach. This is something that you can do every day, and doing this every day will give you more benefits than doing those 16 steps just on the weekend. Okay, so consistency is the key. I always keep saying that consistency is the key. Be consistent with your skincare. Just a moisturizer and sunscreen in the day, and a good face wash that is clearing out all the debris of the day at night, followed by a moisturizer. And in case you are my age, your family is completed, start your retinol. It's going to spare you of a lot of money that you will spend in your lasers and chemical peels, and there's no harm in doing those things, and those things are also more effective in people who are regularly using retinol. Okay, so I have not disconnected my video. It has been going on continuously, and I hope you can see that gradually the sunscreen has settled down on my face. Now those of you who are makeup enthusiasts can put on makeup just over it. Don't wipe it off. Let it stay on your skin for the entire day. If you want to wear makeup on top of this. I'm feeling comfortable with my sunscreen now. If initially when you apply sunscreen it feels a little difficult, gradually you get used to it, and it takes about 3 4 maximum 5 minutes for you to feel normal with your sunscreen. Those of you applying it, they will agree with me. Those of you not applying, please start right now. Okay, so these are the steps how different creams are to be used. So I hope that you learn something out of this video, and very soon we are going to start our 100 days of skincare. uh, though I cheated a little from you guys because I was not able to make these videos, but I started my skincare, which was pending. I'd stopped it for last 3 months. I was not doing anything about it, but now I have restarted it, and it's already been 4 weeks, and I have already started seeing improvement in my skin. I'm going to shoot close-ups and show you that also. And very soon, maybe in a day or two, we will start that 100 days of skincare, showing up consistently for your bare minimum skincare. Okay, I'll see you then, and you can see the video again and again just to learn how to make use of all these things. And only this much is enough. And yes, there is no role of toner in skincare. We have not read anything about toners in our textbooks. If you want to use I don't know, I am particularly not a fan of toner. I have never used it, I've never bought it, but still my skin is fine. I find toners to be dehydrating. When I've gotten some things done professionally, I've spoken to some of my friends or used some things, I don't find them useful. If you still want to continue with toners, you can maybe it comes after cleaning your face. The toner comes first, and then comes the hydration part, if you really are a toner enthusiast. And even if you have acne prone skin, you can apply moisturizer. You should apply moisturizer. That will help balance out the oil production on your face. Okay, so a lot of people say that हमें तो acne है, तो हम moisturizer नहीं लगाते हैं. No, that should not be the case. Even if you have acne, you should apply moisturizer. That moisturizer can be light, that moisturizer can be gel based, and you have to follow it up with a gel based sunscreen also, even if you have acne prone skin like I do. Okay, so see you again next time very soon, and we'll be starting that 100-day channel. In between, in case you guys want to know something, in case you got some doubts after this video, or in general if you want to know something, please comment. I have got a small community. I think I can answer all of you. Okay, till then, bye. I'll see you the next time very soon. Be ready for your 100 days skincare glow up. Bye bye.